Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for joining. Okay, so today we are having the measurement and standards. So we were looking to discussion of this measurement standards. Last week we discussed about the uh, different type of metrology. We discussed the metrology as a definition. Then we discussed different types of metrology. We discussed measurements procedures. Then we discussed different metallurgical characteristics of an instrument, that when you have instruments, what are the different technical specifications that leads toward the efficiency of the or effective efficiency of the instruments, measuring instrument. Then we discussed that if you would like to select the instrument, what are the basis for selection? What different type of basis on the basis of which you can select the instrument? Then we discussed about the for example, different precision and non-precision base. And then we discuss about the level of the different type of errors that can lead, that can be associated with the measurements procedure and measurement phenomena, and how we can get rid of this kind of error. So there are different type of errors. So we discussed this one, and you will also given the assignment on the basis of errors. Okay. So what we are looking today is to measurement standards. Anybody would like to make any comments? What we mean by the standards? Any idea? Level of quantity, level of quality. Level of quality. Now what we mean by, like for example, आपके देखिए ये ASTM standard है, ये ASME standard है, ये BSI standard है. What does a standard mean? या मीटर standard है, तो standard का मतलब क्या है? Reference. जी? Let's say I'm just giving you a situation. Let's say there are 1, B, and C. There are 3 workers. Okay, he is working on machine 1, he is working on machine 2, he is working on machine 3, and they are manufacturing the same product. Or let's say this is a different countries. You can also assume that, but they make the same product. Okay, beta. And country A is following a British standard, BSI standard. They are following ASP standard. Let's say for example, associated with the same product, and they are following ASTM standard. Now, when they manufacture this product and they look into the uniformity of this one, do you think they will be having the same uniformity level? Maybe, sir. हो सकता है. Maybe. You are not sure. Standard को different standard को follow करना. एक standard को follow कर. Let's say they are also measuring the BSI. They are also following the BSI, and they are also following the BSI. Now, what do you think? What will be the level of uniformity now? Same. It will be more than this one. Okay, and that's why the standard is a kind of legislation, or just like you can kind of establish a working standard,
or just like a working that is developed by the or approved by the authority in order to have uniformity in the system. Now, let's say if you have the in a house, let's say you have one electrical fridge that is of company X, and they have been installed in your home. Like these are different switches installed, but suddenly they have been a short circuit and they have been broken down. Now, if you go to the market and you haven't got this one, the same company you haven't got now, but there are different other companies having the same product, the same size, the same standard. Now, what will you do? This is one, two, three, four different other options you have. यूनिफॉर्मिटी लेवल में जो कई होगा उसमें Okay, it means if they are having the same standard, so there will be no issue to replacing the same one. But if they have a different type of standards, so then it will have a different type of problem. Otherwise, then you will have to make some sort of either you have to make your own or you have to make some sort of adjustment in your own. Let's say you have an like the connecting rod of a vehicle. Let's say you have the Corolla X car, and there's an issue with the connector being broken down the connecting rod. Now, if you go to the market and you haven't got the same connecting rod, okay, what will you do? Sir, we will search for any alternative. You will search for any alternative. Let's say there are other companies, let's say company Y, company Z, they have, let's say you get the Corolla XLI and GLI model connecting rod, and you check it if that is okay, the same standard. Otherwise, if it is not the same standard, what will you do then? What will be the process? What will be the if you don't do that, or if you don't have the same standard? Manufacturing design, sir. Either you will have to manufacture or you will have to readjust, rework on the existing one that already available, and you have to accordingly adjust according to the standard. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Okay, so this is the standard. Like generally the history of standard is just like you can say that it is the precision. If you consider precision as a religion, so how you will make the precision to happen? Okay, like for example, if you follow the precision just like a religion, that whatever in measurement system, if you categorize the precision is a more importance, then what will be the different type of procedure to make this precision happen? So measurement as standard is the only way to make this happen, to make this precise, to make the system more precise, and to ensure the precision and accuracy in the system as well. Now we can talk about the history of measurement standard. We have used to have the royal cubit. We used to have, that is the 3000 BC year. Then in the 16th century, we used to have a feet. And then in 18th century, we used to have a yard. And then we introduced the meter in the 18th century. Then in 19th century, the upgradation of the meter, and then the well. So this is the history of the standard, the measurement standard. How this standard happened? The royal cubic feet in the time of the Pharaoh, that the lost a very ancient time. The people don't have that proper measurement system, but they do have some sort of standard. Like they were having the length, that what will be the length. So if they have a hand, they used to use their hands for measuring the system. Like how? If that is just like if that is the just like a hand, so this is the elbow.
So from elbow till the tip of the finger. This whole system is considered to be the 1 feet trial cubic at that stage. That this is the distance from the elbow, bone, from elbow till the end of the thumb, the elbow, the finger. That was considered as a distance of trial cubic. Okay, बेटा समझ आ रही है? Yes, sir. Okay, and then when we discuss about so this was used to have their standard length, but the length is like the standard, using standard. Then in 16th century they were using feet, and that is they just like introduce the feet, and this will be the distance over the left feet of the 16 men lined up after they left their hands or just left there for the morning prayers in the church. Like, for example, 16 people were lined up. So there was the distance of their left hand. How much the total distance of their left hand of the 16 people when they were standing on the Sunday morning for the just like for the morning prayers in the church, and they were used to consider that length as a standard feet. And after that one, the King Henry introduced the yard in the 18th century, and it was considered to be the distance from the top of the nose till the end of the thumb. Like, for example, if this is the nose and this is the bottom, the thumb. So the distance from the nose till the thumb, that was considered as a meter, as a yard distance between. Okay, so this was, they were using some sort of standard. And suddenly, and then this was the 18th century, the first time the standard was developed, which was supposed to be 1/10 of the length of the quadrant, just like a quadrant of the each month that will passing through the frequent. मैं जरा इसकी रीडिंग जरा सही नहीं आ रही, मैं जरा इसको दोबारा देख लेता हूँ क्या कहते हैं स्टैंडर्ड के बारे में. अच्छा, मीटर. The first metric standard was developed, which was supposed to be 1/10 millionth of the quadrant of the Earth meridian passing through the Paris. So this was just like a definition of the meter at that time. And then later on in the 19th century, we upgraded the meter that it was a specific, like a specific bar. Okay, this made of a specific material, and this is supported on the roller, and this was kept under certain condition, and there were 2 lines has been dropped. So between the distance between the 2 inscribed circle was defined as a meter, 1 meter. समझ आ रहे बेटा? And then after that one, the 19th century, because there were more accuracy and more precision was required, and the meter standard was not that much accurate to give the precise measurement in a more sensitive environment, and then we introduced the wavelength standard, which was measuring the length with respect to the light speed as well. समझ आ रही बेटा? So this is the history of measurement, that we were introduced the real cubic, then there was 16th century, there were feet, that was, and then yard was defined, then was meter, upgradation of meter standard, and then the wavelength standard. So this is the follow of the history of the measurement standard and development of the measurement standard. So the point I just want to make, that if you don't have the measurement standard, but there were some sort of procedure they were following, just like to have the standardized measurement. Otherwise, if they don't have the standardized measurement, so everybody will have a different type of measurement system, and they will not have the same uniformity in the system. Okay, what we mean by the standard is that the word standard means something that is set up by and established by the authorities as a rule for the measurement of a quantity, weight, and value, etc. Now, quantity means, अगर for example liquid एक quantity है आपके पास, weight अगर आपके पास mass वगैरह है कोई आप इसको measure, या value for example currency, या आप उसको gold को वैल्यू या किसी और मटेरियल को आप वैल्यू करना चाहते तो आप किस बेस पे इसको वैल्यू करेंगे. So this is the standard is something that is being set up and established by authorities. Now, every government, every country has their own authority. Like for example, in Pakistan, we have the supreme authority is with the parliament.
and the constitution. समझ आ रही बेटा? The parliament is an authority which, for example, they pass different type of bills in order. If they pass a bill today, that from now onward, the mass will be measured in pounds. So then everywhere this will be applicable. Okay, because we have changed our standard. Either we don't follow the kg, we don't follow the pound, and we established our own standard for measuring, let's say, the mass, like measuring the liquid, measuring the pressure, measuring the velocity, measuring the length, measuring the just like counting the number. So we introduce a new number, a new standard, and we establish this by authority. So that will become the act of the parliament, and that will become a standard from now on. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. We have a different type of standard. We have a line standard, we have N standard, we have wavelength standard. Line standard means that is what we developed by using the, for example, if you have a distance, and the distance is measured between the 2 points. Okay, so this is considered as a line standard. Now, if you have two surfaces like this one, if you have a block, let's say this is a block, and the distance from this surface to distance from this surface, this is start from here, and this is the end at this point. So this is the what we call is the N standard. And if you consider this length or this length by using the speed of light and using the wavelength, so that will be considered as a wavelength speed, wavelength standard. समझ आ रही बेटा? ये वेवलेंथ फिर बताएं सर. If you, for example, if this is the length, these are the 2 points. Okay, beta? Like, for example, if this is a river, this is one end of one side of the river, this is another side of, so you point one and you second another point. So the distance between these 2 points, if measured, that will be considered as a line standard. If you use the line standard to measure this 2 point, the distance between the 2 points. But if you have a surface like this one, if you have a block and the measurement starts from this end and it ends at this end. So this distance is a surface, is an end-to-end measurement between the two surfaces. This is one surface and this is another surface. समझ आ रही है? For example, you have a brick, you have a wall, like this is the wall standard. This is 1 meter wall. समझ आ रही बेटा? अगर आप, like for example, अगर आप जो measurement tape है, उससे आप इसको measure करें, तो that will become a line standard. But if you have bricks, and you say that one brick is, for example, 10 millimeter, and you make a block of 10 bricks of the same size, so that will make them, this is the N standard, this is one N standard, this is N standard, because you are measuring the distance between the two surfaces. If this is the bricks, so the surface of this bricks is this surface, this is another surface, and the distance between these two surfaces is considered as an N standard. Now, if you consider this distance, measuring this distance by using the speed of light of wavelength instrument, which uses the wavelength to measure the length, and it starts from this end to this end, so that will be considered as a wavelength standard. It will be using wavelength standard. समझ आ रही कि इतनी wavelength इतने मीटर के बराबर है? Yes, sir. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the line standard, as I discussed, that it is the line, according to a line standard, the yard or meter. That is because this is the measuring the distance, or a standard that is measuring the distance between the 2 points, is defined as the distance between inscribed line and the bar of metal under certain condition of temperature and support.
I did discuss you that the meter or the yard is a specific standard, and that is made of specific material, and that material is made what we call is the metal bar, and there are two inscribed lines. For example, if we say that this is the total length of the bar, and the length, we have two different type of, like, let's say this is the two inscribed line. Okay, under certain condition of temperature, let's say that it is contained in a closed environment where the temperature has to be, let's say, 62 degree Fahrenheit. The pressure has to be, the humidity has to be like this one, and it has to be supported like on the roller. So the line between the distance between two inscribed line is considered as 1 yard or 1 feet, whatever the case is all about. And this is legally authorized in an act of parliament. I discussed that there will be especially authorities, either it will be a parliament who is supreme, then it will be legally authorized, it will be legally established, it will be legally accepted, and then it will be considered as a standard, line standard in the country. Now, when we talk about the imperial standard yard, so the yard is defined as the distance between central transverse line and the plugs when the temperature is constantly 62 degree and the bar is supported on the roller. Why we are considering like under certain condition of temperature and support? Why we say this one? If we do not say this one, like for example, up to the metal bar, and we did not say this under certain condition of, so what will be the problem and what will be the impact of this? The temperature इफेक्ट करता है सर उसके लिए metal की properties जो है वो change होते हैं over the time. If you remember, I discussed in the last week that there is a drift value. So again, the temperature and the humidity change the condition of the material, and that's why the standard which was established, and if there is slightly 0.00001% change is also there, that will not remain the same standard. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Okay, then it is just like, for example, this is exactly the same bar, bronze metal, natural axis of this one. So this is, let's say, this is the total distance, this is considered 38 inch, and this is the roller inscribed lines, this one, and the distance between the inscribed line is considered to be 36 inch, or you can say 1 yard, or just like a one, whatever you consider 1 yard between the and terminal line between 62 degree Fahrenheit. This was considered a British, like imperial yard, and this is considered as standard. Now, what we say, the international standard prototype meter, like for example, you say the meter, we use meter. आपके ख्याल में मीटर हमने एफएसी में कुछ पढ़ा होगा आपके कि ये मीटर क्या चीज है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस तरह नहीं है, आपके ख्याल में? Sir, basic unit of length. जी जी बेटा? Sir, the basic unit of length. यस, लेकिन ये मीटर है क्या? मतलब हम किस चीज को मीटर कहते हैं? ऐसा यूनिट है ये हमारे पास सर. ठीक है ना, मैंने कहा यूनिट कहाँ से है? मैंने आपको कहा कि आपकी जो क्या कहते हैं, आपका नाम जो है प्लान जो है मुनीब है, तो मुनीब किसी ने रखा होगा ना? यस सर. हाँ, तो ये मीटर सर एक स्टैंडर्ड है, कहीं पे स्टैंडर्ड है. ओके, ठीक है. और किसी जगह पे सर ये पेरिस में मेरे ख्याल से सर साइंटिस्ट जमा हुए थे उन्होंने. ओके, ये जो लोग हैं मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज के लोग, वो एक एग्रीड on a standard that there shall be a uniform standard for measuring the length. Okay, and what we call, like for example, अगर मैं इसको लेंथ मीटर कहूँ, इसको कहूँ या इसको लेंथ कहूँ मीटर कहूँ, किसको कहूँगा? ये भी तो एक रीजन है ना. So that the International Bureau of Weights and Measurement established the meter as a linear measuring instrument standard in 1875. हमने कहा कि 18th century में मीटर इंट्रोड्यूस हुआ.
So that was basically 1875. It is the distance between the center portion of two lines engraved on a polished surface of bar. एक बार है, ठीक है, पॉलिश्ड है, और यहाँ पे एक टू लाइंस हैं जो यहाँ पे इनग्रेव्ड है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि 1 मीटर। समझ आ रहे बेटा? This bar is made of platinum iridium alloy having unique web cross section. अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह उसकी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है बेटा? अगर ये क्रॉस सेक्शन आपने क्या किया, डिजाइन मैकेनिक्स, ठीक है बेटा? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह मैकेनिक्स डिजाइन करूं, ये सिंपल डिजाइन है इस तरह, ठीक है, और फिर या मैं इस तरह मैकेनिक्स डिजाइन करूं, तो क्या दोनों के मैकेनिक्स में डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज होगी कि नहीं होगी? दोनों की डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? दोनों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी। So because of that one, it has a unique web cross section in order to maintain its length and design parameters. समझ आ रही है? तो जो उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी है उसको इंटैक्ट रखने के लिए उसका एक यूनिक वेब क्रॉस सेक्शन है। Meter is also defined as a path traveled by the light in a vacuum during time interval of this one, और इसको फिर हम वेवलेंथ के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है बेटा? Yes, sir. The example of the line standard include meter, yard, steel ruler, exact scale exact, और ये वो यूनिक क्रॉस सेक्शन है जो मैंने आपको कहा कि ये वही इनग्रेव लाइन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी है आपको नजर, और ये जो डिस्टेंस है between these 2 points, this is considered as a 1000 millimeter, and 1000 millimeter is considered as a 1 मीटर। अब देखिए ये जो यूनिक वेब क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 16 मिलीमीटर 16, इन ऑर्डर टू कीप द डायमेंशनल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे जो इनके साथ जो क्लोज एनवायरनमेंट है, ठीक है बेटा, ये क्लोज एनवायरनमेंट ये प्लेटिनियम मेरिडियम एलाई से बना हुआ है, और इसकी जो एनवायरनमेंट है क्लोज है, इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, अदरवाइज इफ यू चेंज द टेम्परेचर, इफ यू चेंज द प्रेशर, इफ यू चेंज द ह्यूमिडिटी लेवल, so then the cross section will disturb this web cross section, and that will not remain the same distance as we consider at the meter distance as well. So this is what we call the international standard prototype meter. Now let's say if you have, let's say this is the end, this is one end of the river and this is another end, so you can use the line standard to measure the distance between, but there are certain conditions in the working environment, in the industrial activities, where you have the difficulty to use the line standard because of the size, because of the, like for example, अगर आपने 1 millimeter, let's say 1 millimeter distance measure करना है, तो will you use the meter for this one? No, sir. No, There sir. will be, there is a certain problem with that one. I need a standard which exactly give me 1 millimeter. Okay, beta, and which will be according to the standard, which have zero error. Okay, beta. Yes, sir. So in the working environment, sometimes the line standard becomes difficult to work with, and for that reason, there is a need of some other standard which can give me a more precise, more accurate result. So the need of then the end standard was developed. The need of the end standard arises is the use of the line standard was difficult at various places in the workshop. And when we talk about, let's say that this is the 2 points and the distance between measured as a distance, or the length is measured as a distance between the 2 points, so we consider that is a line standard phenomena. But when there's the two surfaces and the distance is measured as a surface distance between the two surfaces, so we consider that is an end surface, end standard phenomena. समझ आ रही बेटा? Yes, sir.
End standard can be made of a high degree of accuracy. Now, considering the accuracy of the end standard compared to the line standard, the end standard is more accurate compared to the line standard. And the end bar is normally, end bar is a kind of example of the end standard, and it is made of steel having cylindrical cross section of a different length, and you can use this for different type of the length. Like for example, this is one end bar, but this cross section is the same, this diameter is the same, but you can have a this one and can have a different type of length, and you can combine them to make a precise measurement of the length of that. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Okay. Another example of the end standard is what we call is the slip gauge phenomena. Slip gauge is normally an end standard, and they are practically end standard, and that can be used in the linear measurement in many different ways. For example, let's say आपने माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर को कैलिब्रेट करना, ठीक है बेटा, एंड यू से कि ये मैं चेक करूं कि क्या वाकई जो ये 10 मिलीमीटर मुझे मेजरमेंट दे रहा है, ये जो माइक्रोमीटर एग्जैक्टली 10 मिलीमीटर है कि नहीं, ये वाकई इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई कैलिब्रेशन एरर तो नहीं है इस माइक्रोमीटर में, इस इंस्ट्रूमेंट में. इन ऑर्डर टू चेक दिस वन, you need a specific measurement which give you exactly precise measurement of 10 millimeter. समझ आ रही बेटा? Now, Yes, sir. you take an example of the end block, a block of end standard which exactly gave 10 millimeter, and you hold it here, and then you check that whether this measurement is exactly give the 10 millimeter, or if it is not giving 10 millimeter, it means there is something wrong with the micrometer or with the instrument that you are measuring, making measurement. These slip gauges were developed by the Swedish engineer, and this can be used in a different type of condition. They are different type, international standard, metric standard condition, imperial. These can be used in a different type. For example, if you need a slip gauge in the international standard, metric British standard, imperial British standard, or DIN, or just like these are different countries, different type of standard they are going to follow. But they are being designed. For example, अगर किसी country में international standard use हो रहा है, British standard use हो रहा है, imperial standard use हो रहा है, DIN standard use हो रहा है, या GIS standard use हो रहा है, तो आप हर डिजाइन के मुताबिक, हर स्टैंडर्ड के मुताबिक स्लिप गेज डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, and they use it in many different ways. Like this is one of the common example of the block. समझ आ रही बेटा? These are different type of slip gauges. Like for example, this is one block. अब अगर आप for example ये वाला सरफेस उठा लें, ये वाला ब्लॉक, ठीक है बेटा, अब ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से उठा के यहाँ, तो ये टू सरफेस है. This is one surface and this is one surface. So the distance between these two surfaces is considered as something measurement. This is one end standard, this is another standard, this is another standard. These are different type. For example, आप कहते हैं कि मुझे 1.01 चाहिए, so you can have this one block and that is 0.1. So 1 plus 0.1, that will be considered as 1.01 millimeter. समझ आ रही बेटा? जी बेटा. सर जी Yes, ये sir. फिर थोड़ा समझाएं. मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं भी ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड स्लिप गेज मुख्तलिफ साइज के हैं, ये एक सेट ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ सेट स्लिप गेज, ठीक है बेटा. अब ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के हैं. देखिए ये 2 मिलीमीटर है, जो भी यूनिट आप यूज करें, जो भी स्टैंडर्ड आप यूज करें, 1.00, 2.0. नाउ इफ यू नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सरफेस, और ये जो 2 पॉइंट इनके साथ जो डिस्टेंस आप मेजर करें कि ये मुझे एग्जैक्टली 2.01 के साथ मिल जाए, एग्जैक्टली मुझे इतनी स्टैंडर्ड जो सरफेस है या जो मेजरमेंट है या जो गैप है इसमें 2.01. फॉर एग्जांपल टू सरफेस, अगर आप मशीन एडजस्ट करते हैं और मशीन दोनों इक्विपमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट, दो इक्विपमेंट है, दो पार्ट्स है, उनके दरमियान जो क्लियरेंस है वो एग्जैक्टली 2.01 होनी चाहिए.
अब ये 2.01 को किस तरह आप एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो इनके साथ दरमियान जो क्लियरेंस है इन दो मेल्टिंग पार्ट के दरमियान, दैट इज एग्जैक्टली 2.01 मिलीमीटर। इसके लिए आपको एग्जैक्टली 2.01 मिलीमीटर का स्टैंडर्ड चाहिए। अब वो स्टैंडर्ड अगर या तो ये कि आप स्केल यूज करें, तो वेयर द स्केल स्टील रूल यूज करें, तो क्या फॉर एग्जांपल अगर ये स्टील रूल में इस तरह ले लूं, इस पे मुख्तलिफ ग्रेजुएशन है इस तरह, तो क्या ये एग्जैक्टली मुझे 2.01 देगा? नो सर। What I will do, I will select the gauge and a block of 2, let's say मैं 2 एक सेलेक्ट करूं, यहाँ पे मैं देखूं ये 0.1 है तो 0.1 को और सेलेक्ट करूं, 0.01 सॉरी 2.01, ठीक है बेटा। या अगर ये 0.1 है 0.01 भी इसमें होगा, इस पर नजर नहीं आ रहा, या 2.01 भी इसमें है, एग्जैक्टली 2.01 भी इसमें 2.11 भी होगा, ठीक है। मैं वो ले लूं, अगर मुझे एग्जैक्टली वन ब्लॉक ऑफ सेट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो आई कैन कंबाइन अ डिफरेंट ब्लॉक्स एंड देन कैन अचीव माय रिक्वायर्ड डायमेंशन, ठीक है बेटा। इसका Yes, sir. किस तरह होगा, आप इस तरह एक ब्लॉक लेंगे, ठीक है बेटा, इस तरह, और एक लेट से ये जो डिस्टेंस है ये लेट से है 2 मिलीमीटर, आपको 3.5 चाहिए, 3.01 चाहिए फिर से, ठीक है। 2 मिलीमीटर मैंने एक ब्लॉक लिए, इसके साथ मैंने 1 मिलीमीटर एक और ब्लॉक लिए, और 0.01 जो है मैंने और लिए, तो इसको जब मैं कंबाइन करूं तो दैट विल गिव मी 3.01। समझ आ रही बेटा? यस सर। Okay, this is what we call the slip gauge phenomenon, and it is ये भी एक n स्टैंडर्ड है, ये भी n स्टैंडर्ड है, ये भी n स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका प्रोसीजर किस तरह होगा, क्योंकि ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं, तो आपने थोड़ा सा इसको पुश करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले एक ब्लॉक लिए, दूसरा आपने इसके ऊपर इस तरह रखा है राइट एंगल पे, फिर आपने इसको ट्विस्ट किए, ठीक है, और ये फिर आपने इसको इस तरह इसको अलाइन किया इसके साथ, फिर दूसरा इसके ऊपर 180 डिग्री पे रखा है, फिर इसको थोड़ा सा पुश करके ज़रा थोड़ा सा फोर्स लगा के फिर इसके साथ आपने इसको लगा दिए, और ये आपस में अलाइन हो गई, ठीक है बेटा। और ये अलाइनमेंट के दौरान ये जो रिंग, ये जो आप रोटेशन है, इसको हम कहते हैं रिंगिंग। तो इस ये रिंगिंग जो है वो स्लाइडिंग से भी हो सकती है और रोटेशन से भी हो सकती है, ठीक है बेटा। किस तरह करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन दीज आर द टाइप ऑफ स्लिप गेजेस। नंबर कुछ स्लिप गेजेस उसकी ज्यादा हाई एक्यूरेसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर स्लिप गेज के तौर पे यूज, उनकी एक्यूरेसी जो है +-2 माइक्रोन पर मीटर, ठीक है बेटा। और ये नॉर्मली आपकी जो मास्टर स्लिप गेज के एक स्पेसिफिक स्लिप गेज होगी जिसकी एग्जैक्टली ये एनवायरमेंट होगी, फिर इसके साथ जो आपकी रेफरेंस गेजेस होंगे वही वो स्लिप गेजेस है, वही स्लिप गेज है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी जो है कंपेयर टू दिस वन उतनी नहीं होती, ये +-4 माइक्रोन लेट्स से कंसीडर। उसके साथ फिर रेफरेंस गेज के साथ आप कंसीडर करते हो वर्किंग गेज, समझ आ रही बेटा। और वर्किंग गेज की जो नॉर्मली आप शॉप फ्लोर पे यूज करते हो उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती, +-8 माइक्रोन। लेट्स से इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप एक शॉप फ्लोर पे एक बंदा काम कर रहा है, वो एक मेजरमेंट है, वर्कर है, इसके साथ डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनके वहाँ पे एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, और फिर एक नेशनल लेवल पे एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। लेट्स से ये स्टैंडर्ड बना रहे हैं, जो बच्चों के जो फीडर है, बॉटल है, उसका वो बना रहे, और उनकी एक खास मेजरमेंट है कि ये जो प्लास्टिक यूज करें, उस प्लास्टिक में जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मेजर करने के लिए इन वर्कर के पास एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि इस इंग्रेडिएंट के साथ इसको ये मेजर करें। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है तो जो इंग्रेडिएंट जो मेजरमेंट ये ले रहे हैं, आपके ख्याल में उसमें मसला होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। तो ये जो नॉर्मली होगा सर। जो शॉप फ्लोर पे जो वर्कर जो स्टैंडर्ड या जो गेज या जो चीजें उसको हम कहते हैं वर्किंग गेज।
अब ये जो है क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है, इनके पास जो गेज है वो उससे ज्यादा एक्यूरेसी वाले होते हैं, जो वर्किंग गेज, जिसको नॉर्मली कहते हैं रेफरेंस गेज, जिसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, और ये नॉर्मली इसको ऊपर चेक रखने के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा। अब अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों के मेजरमेंट में मसला हुआ तो इसका मतलब है कि या तो ये गेज में मसला है या इस गेज में मसला है, लेकिन कंपैरेटिवली इनके पास जो गेजेस है इनकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो वी कैन से दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्किंग गेज। समझ आ रही बेटा? और आपका जो स्टैंडर्ड है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड या क्वालिटी का नहीं बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, now if we have a problem with this quality assurance gauge, so then we will have some sort of a national quality standard। हम उनके साथ फिर कनेक्ट होंगे और ये फिर मास्टर स्लिप गेज या मास्टर गेज की तरफ यूज होंगे, जिसके साथ हम ये और फिर इसके साथ हम ये यूज करें। ठीक है बेटा? सो इनडायरेक्टली वी आर कनेक्टिंग आवर वर्किंग गेज विद द नेशनल गेज सेंटर। समझ आ रही है बेटा? यस सर। आप इसको ग्रेड 0 भी कहते हो, ग्रेड 1 भी कहते हो, ग्रेड 2। ग्रेड 0 की एक्यूरेसी कम होती है, जिसको हम नॉर्मली वर्किंग गेज कहते हैं। ग्रेड 1 की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, उसको रेफरेंस गेज की तरफ यूज करते हो। ग्रेड 2 को हम मास्टर स्लिप गेज कहते हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा यूज होती है। सॉरी, नो, ग्रेड 0 is considered as a master, grade 1 is considered reference and grade 2 is considered as a working। ठीक है बेटा? उल्टा मैंने कह दिया, सॉरी। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ अब किस तरह यूज होते हैं? लेट मी शो यू वन शॉर्ट यूट्यूब, लेट्स से ठीक है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके, नाउ Yes, sir. अगर नाउ व्हाट वी वांट टू हैव कंपैरेटिव एनालिसिस के लाइन स्टैंडर्ड और इन स्टैंडर्ड में दोनों में कंपैरिजन क्या है?
या डिफरेंस आप कह दो, ठीक है बेटा? आवाज आ रही बेटा मेरी? आहिस्ता आ रही है सर, जी थोड़ी सी आहिस्ता हो गई अभी। अभी सही है? यस सर। ओके एक मिनट। अभी सही आ रही बेटा आवाज? यस सर सही है। अच्छा ओके, नाउ वी कैन हैव अ लुक एट दिस कि ये जो हमारे पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर लें। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जो राइटिंग है वो सही नहीं है, इन एनीवे ओके एनीवे ओके। जो प्रिंसिपली there is a principal difference between the two surfaces that we say that length is expressed as a distance between two lines. Line standard मैंने कहा कि जब two lines हो और उनके दरमियान जब distance measure करें तो that will consider as a line standard. The n standard is expressed as the distance between two plate parallel surface faces. समझ आ रही बेटा? Accuracy wise, the line standard has less accuracy compared to the n standard. और उसमें जो टॉलरेंस जोन है वो मोर स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू द लाइन स्टैंडर्ड में। आप यूज वाइज देखते हो कि उसमें कौन सा यूज करने में इजी है, तो जो लाइन स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आपके पास रूलर है, रूलर को आप ले रहे और किसी के साथ रख ले तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए कि इसकी लेंथ कितनी है। बट इफ यू आर यूजिंग द सेम, इफ यू आर मेजरिंग द सेम लेंथ बट द यूज ऑफ द एंड स्टैंडर्ड, so that use skill, that required skill and time consuming as well. So time consuming के लिहाज से measurement is quickly and easy with the line standard, but the measurement with the end standard is not so quickly and so easy as compared with the end standard. Effect of wear, in terms of the line standard has a less wear and tear, while the end standard is more wear and tear during the measurement surfaces. Like for example, if you are making a three block of surfaces, three block of end slip gauges, and there will be a chances of the wear and tear, then you can have the you can have errors in the system. Alignment wise, it cannot be easily aligned with the axis of measurement, and while the end standard can be easily aligned with the axis of measurement. मैन्युफैक्चरिंग कास्ट वाइज देख ली तो सैंपल टू मैन्युफैक्चर, अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्टील रूल बनाते हो और आप एक एन स्टैंडर्ड बनाते हो, तो स्टील रूल का जो प्रोसेस है वो सिंपल है कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेम एंड स्टैंडर्ड। अगर फॉर एग्जांपल 1 फीट का आपने लाइन स्टैंडर्ड बनानी है और 1 फीट के आपने मुख्तलिफ स्लिप गेजेस बनाने हैं, तो दैट इज बिकम मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड द कॉस्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू द लाइन स्टैंडर्ड। आपका जो ये पैरेलल इफेक्ट है, अगर आपने लास्ट टाइम उसमें जो एरर्स वगैरह थे वो पढ़े तो उसमें पैरेलल्स का इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा। तो जो लाइन स्टैंडर्ड है उसमें पैरेलल इफेक्ट्स जो है या पैरेलल एरर जो है वो कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू द ज्यादा है कंपेयर टू द एंड स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड में जो आपका पैरेलल एरर है या जो अलाइनमेंट, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट हो सकती है, तो ये जो पैरेलल एक्स है ये बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट है। तो लाइन स्टैंडर्ड में अलाइनमेंट बहुत मुश्किल से होती है कंपेयर टू द एंड स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड में अलाइनमेंट इजी है, हो सकती है, तो इसकी वजह से उसका जो पैरेलल एरर है वो भी कम है कंपेयर टू द लाइन स्टैंडर्ड। एग्जांपल लाइन स्टैंडर्ड की जो हमारे पास स्केल यार्ड है, मीटर है, इस तरह की ये जो फीट है, ये जो एग्जांपल है। वाइल जो हमारे पास एंड स्टैंडर्ड की है वो स्लिप गेज है, एंड बार है और वर्नियर कैलिपर वगैरह है, इस तरह की एग्जांपल। समझ आ रहे बेटा कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे?
यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई मसला? नो सर। Anybody else? नो सर। Okay. नो सर। Wavelength standard. Now we discussed the line standard, we discussed the n standard. Now we want to have a more sensitive length of measurement. For example, अगर आपकी कोई biomedical equipment है या कोई न्यूक्लियर डायमेंशन है या न्यूक्लियर रिजोल्यूशन है या मोर मेडिकल साइड पे कुछ मेजरमेंट आपने लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट एंड प्लांट्स में या और कुछ है, हार्ट एंड प्लांट्स वगैरह या और कुछ चीज़ें लेनी है आपने, मेजरमेंट लेना है, या वेंस की, ह्यूमन वेंस की या रगों की या कुछ और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की सेंसिटिव आप ले लें मेजरमेंट, और उसमें आप थोड़ा सा भी 0.001% भी एरर कर दे तो दैट कैन कॉज अ ह्यूज डैमेज एज वेल. In order to have a very sensitive measurement and a very precise and accurate measurement, we need a very precise standard. And because of that, when the n standard and line standard still have some sort of error and still have some sort of deficiency and limitation, so we need to have another kind of standard which give us the exact measurement, and that can use the frequency and the light and frequency measurement, which give a highest accuracy of the time frequency as well. After that is what we call the wavelength. 1 meter is considered this much wavelength, and then 1 millimeter is considered this much wavelength, and this or that yard is, you can have a conversion of this one. So if you are using the same standard, इसके लिए भी आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट है कि वेवलेंथ स्टैंडर्ड यूज करें. और आपको जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो आप टेम्परेचर यूज करते थे, टेम्परेचर जब आप चेक करते तो आप थर्मामीटर यूज करते, लेकिन आजकल टेम्परेचर गन आए हुए हैं, ठीक है भैया, लेजर गन की तौर पर. यस सर। तो वो आप नॉन कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट है ना, लेकिन स्टिल दे कैन टेल यू अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन दैट यू आर मेजरिंग. अब उसकी एक्यूरेसी और लिमिटेशन वगैरह अपनी जगह पे है, लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड मौजूद है, ठीक है बेटा. यस। ओके, देयर आर सब division of standard. Like for example, the primary standard is what we mean is primary standard, like for example, which is considered as the one and only primary standard. Like for example, अगर आपके जो prototype meter है, that is more accurate and that is only one, and that is contained in a specific specialized pressure control environment. ये उसकी जो आपने जिसकी बेस पे स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये वही प्राइमरी स्टैंडर्ड है. तो जो प्रोटोटाइप मीटर है उसको आप कंसीडर कर लो एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है. यस सर। अब ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ये जो प्रोटोटाइप मीटर, ये तो एक है और एक स्पेसिफिक जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपको तो हर कंट्री में ये चाहिए. तो एग्जैक्टली सेम रेप्लिका आप बनाओ और उसको मुख्तलिफ जगहों पे एक सेम कंडीशन पे रखो, लेकिन वो उसी तरह तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी they will be having a secondary standard of the same prototype. समझ आ रही बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल एशिया रीजन में एक है, फिर यूरोप रीजन में एक है, फिर अमेरिकन रीजन में एक है, फिर ऑस्ट्रेलियन में है, फिर अफ्रीकन में है. तो इस तरह एक आपने उसके मुख्तलिफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए, फिर उसके साथ हर मुल्क के लिए एक टर्शियरी स्टैंडर्ड के तौर पे आप एक उससे सेकेंडरी स्टैंडर्ड से एक टर्शियरी स्टैंडर्ड बनाओ. तो जितने आप कम नीचे आते जा रहे इतनी उसकी एक्यूरेसी जो है वो कंप्रोमाइज होती जा रही है. समझ आ रही बेटा? और उस टर्शियरी स्टैंडर्ड के बेस पे हम वर्किंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, जो हम नॉर्मली रेफरेंस गेज के तौर पर भी यूज करते हैं और हम कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज करते हैं और वर्किंग गेज के तौर पर भी यूज करते हैं, ठीक है बेटा? यस सर. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल यू कैन से कि जो हमारे पास लैब वर्किंग एनवायरनमेंट में वो आपकी जो है लैब में जो वर्क फ्लोर में वो हमारे पास वर्किंग स्टैंडर्ड है, और जो नेशनल लेवल पे हमारे पास स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वो टर्शियरी स्टैंडर्ड है, और टर्शियरी स्टैंडर्ड हमारे किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड के साथ अलाइन है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमेशा प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ अलाइन है, ठीक है बेटा? अब अगर इसमें 0.001% भी एरर आ रहा होता है, तो जब आप प्रेफरेंस गेज के तौर पे, जब वर्किंग गेज के तौर पे आ रहे वर्किंग स्टैंडर्ड, तो उसमें तकरीबन वो एरर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर.
Okay. Now calibration. Anybody would like to make any comment on calibration? जी तो बस सर जी एक्यूरेसी अचीव करने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं। हाँ, किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी इक्विपमेंट को, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अगेंस्ट नॉन स्टैंडर्ड के साथ आप उसको एक्यूरेट बनाते हो, इसको चेक करते हो कि इसकी, जैसे हमने अभी माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन चेक की है एक्स नॉन स्टैंडर्ड के साथ। यस सर। और आपका ये जो फॉर एग्जांपल ये नॉन स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और आपका जो कैलिब्रेशन है, जो वर्किंग गेज है, फॉर एग्जांपल अगर आपके कंपनी में, इंडस्ट्री में, वर्किंग पेशोर में एक इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, वो मेजरमेंट करते हैं, तो उनके पास जो स्टैंडर्ड है या उनके पास जो इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं, अगर उनमें कोई मसला है और आप उसको कैलिब्रेट करते हो, तो कैलिब्रेशन वो फिर क्या, ये कैलिब्रेशन क्या करते हैं, डायरेक्टली लिंक करता है आपके कस्टमर की मेजरमेंट इक्विपमेंट को नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। ये आप जब रेफरेंस कैलिब्रेट करते हो, आप किसी नॉन स्टैंडर्ड के साथ या टर्शरी स्टैंडर्ड के साथ या सेकेंडरी स्टैंडर्ड के साथ इसको लिंक करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन से आपका जो इक्विपमेंट है या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो लिंक होता है आपके नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। इसके अलावा जो आईएसओ कैलिब्रेशन है, ये क्वांटिटी कैलिब्रेशन इज नॉर्मली टू डिटरमिन द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इन एरर्स और क्वांटिटेटिव एरर्स ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड एडजस्टिंग लिंक टू द मिनिमम। आप फॉर एग्जांपल आपकी घड़ी है और आपकी घड़ी में फॉर एग्जांपल एक छोटा सा 2 मिनट की पीछे रहती है, तो आपने इसको एडजस्ट किया, उसकी क्लीनिंग की, उसकी वो आपने उसको प्रॉपर्ली उसमें माइनर चेंजेस वगैरह किए और आपने उसको फिर एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू द, उसमें जो एरर था क्वांटिटेटिव में, आपने फाइंड आउट कि इसमें 2 सेकंड का जो एरर है या 2 मिनट का जो एरर है, आपने उसको रिमूव करके उसको अकॉर्डिंग टू द मिनिममली आपने उसको एडजस्ट कर दिया। इन अदर वर्ड, कैलिब्रेशन मीन्स टू फाइंड आउट whether the instrument give correct reading or not. It also include minor adjustment to the instrument. समझ आ रही बेटा? यस सर। Yes, sir. There are different procedure for calibration. अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उनके पास अपना इन हाउस फैसिलिटी है कि वो कैलिब्रेशन कर सकता है, और वो उसके लिए कौन से गेज पर यूज करेंगे, रेफरेंस गेज पर यूज करेंगे। समझ आ रही बेटा? यस सर। तो आप इन हाउस कैलिब्रेशन सर्विस पर यूज करते हैं। अगर आपके पास इन हाउस कैलिब्रेशन सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यूईटी में फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, वो इक्विपमेंट है, खराब होगी, तो हमारे पास एक नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, हम पहले उनसे कांटेक्ट करते कि आप इसको थोड़ा सा रिपेयर करो या ठीक करो या उसको कैलिब्रेट करो। अगर उनके पास इन हाउस फैसिलिटी है तो हमें बता रहे हम कर सकते हैं, या करके हम नहीं करते तो ये इनके फिर हम कंपनी वालों को फोन करते हैं जो उनकी प्रोफेशनल कैलिब्रेशन, जो फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल कैलिब्रेशन सर्विस है उस कंपनी की, उसको अगर वो भी कहते कि हमारे पास नहीं है या नहीं है, जो भी आप कह दो, उसको फिर हम कहते हैं कैलिब्रेशन, प्रोफेशनल कैलिब्रेशन लैब। लेकिन अगर उनके पास भी वो फैसिलिटी नहीं है तो फिर हम गवर्नमेंट को अप्रोच करते ताकि आप आ जाएं और इसको फिर हमारे लिए एडजस्ट करवा दें। उनकी चार्जेस वगैरह होती हैं, वो अपनी डिपेंड करता है, लेकिन इनकी ये कैलिब्रेशन लेवल है, डिफरेंट कैलिब्रेशन, इन हाउस कैलिब्रेशन लेवल, प्रोफेशनल कैलिब्रेशन लेवल और फिर नेशनल कैलिब्रेशन लेवल सर्विसेज। समझ आ रही बेटा? यस सर। आपके पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर जो एक्सरेज वगैरह मशीन जो लगी हुई हैं, जो हम लोग मेडिकल की एक्सरे वगैरह करते हैं मरीजों की, या एमआरआई करते हैं, या एक्सआरडी जो करते हैं वगैरह, जो मटेरियल की एनालिसिस करते हैं, आपको पता है कि इसकी कैलिब्रेशन सर्विस किसके पास है पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे? वो कौन कंट्रोल करता है ये सारी चीजें? पता नहीं सर जी। पीएनआरए का नाम सुना हुआ है? पीएनआरए, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी। नो सर। उनके पास ये सारा कंट्रोल है, वही उसको चेक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये कैलिब्रेशन आप चेक ना करें, तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लड सैंपलिंग, आप ब्लड टेस्ट करते हो, एक लैब है ब्लड टेस्ट कर, उनका जो मशीन है वो कैलिब्रेट नहीं है, तो वो जो रीडिंग आपको देगा तो क्या देगा? फिर गलत रीडिंग देगा। गलत रहे तो इससे डैमेज क्या होगा? इंसानी जान को खतरा हो सकता है। मतलब जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम कुछ और होगी और आप उसको कुछ और चीज की ट्रीटमेंट देंगे।
क्योंकि आप तो टेस्ट के बेस पे आप रिजल्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस कैलिब्रेशन। बाकी तो हर मेजरमेंट में, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, ओके सर। ओके। व्हेन यू डू द कैलिब्रेशन तो मुख्तलिफ इक्विपमेंट पे मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर लगे होते हैं। जब आप एक्टिव, अगर किसी इक्विपमेंट पे एक्टिव लिखे हो तो इसका मतलब है कि ये जो इक्विपमेंट है ये एक्टिव, इसकी रीडिंग जो है बिल्कुल विद इन द टॉलरेबल लिमिट है, आप इसको यूज कर सकते हो। समझ आ रही बेटा? यस सर। यस सर। कैलिब्रेशन बिफोर यूज, कुछ फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ कंपनी है, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट खरीदे, कुछ इक्विपमेंट वो यूज कर रहा है, कुछ इक्विपमेंट वो यूज नहीं कर, उसने स्टॉक में रख दिए। तो जो स्टॉक में जो यूज करे उस पर तो एक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टॉक में रख दी उस पर लिखा हुआ है कैलिब्रेशन बिफोर यूज, के जब भी आप इसको यूज करेंगे उसको पहले कैलिब्रेट कर लें। ठीक है बेटा? यस सर। ओनली फॉर इंडिकेशन, अगर आपके पास कोई हाइट गेज है और वो खराब है, वो उसका जो रीडिंग है वो सही नहीं है, तो ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए यूज हो रहा है, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? जैसे हाइट गेज को आप स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। उस पर ये कैलिब्रेशन की ये रिजल्ट लिखी हुई है चीज। ठीक है बेटा? यस सर। रीवर्क, इसका मतलब ये है कि आपने इसको यूज करने के लिए बिफोर, पहले इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसकी जो लिमिट है वो खराब है, या उसको आपने रीवर्क करना है, इसको आपने रिपेयर करना है, मेंटेन रखना है कुछ इस तरह। ठीक है बेटा? रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब ये है कि ये जो रीडिंग है, जो रीडिंग इससे आई है, इससे जो रीडिंग आपको मिल रही है वो आपको सही टॉलरेबल लिमिट में नहीं है। ठीक है? और राइट अप का मतलब है कि इसको बिल्कुल खत्म, इस मशीन को बस खत्म करो, ये सही नहीं है, काम का नहीं है। तो रिजेक्ट है, रिजेक्ट को रीवर्क कर सकता है, लेकिन राइट अप को फिर आप रीवर्क नहीं कर सकते, दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है सर बेटा? ये ओनली फॉर इंडिकेशन, इसका क्या मतलब सर? मतलब मैंने कहा कि ये इससे आप कोई रीडिंग वगैरह नहीं ले सकते, आप इसको जस्ट रेफरेंस के, जैसे एक स्टैंड, जैसे एक इंडिकेशन के तौर पे यूज करिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाइट है, तो आप कहते हैं कि रफली हाइट कितनी हुई, तो आप उसके साथ चेक कर, लेकिन आप कहे कि ये एग्जैक्टली ये चीज है कि नहीं है, तो वो फिर ये चीज आपको नहीं देगा, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको फिर ये नहीं दे, ये आप सिर्फ इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके सर। अच्छा, जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, ट्यूनिंग खराब हो जाती है, तो आप क्या करते हो? या आपकी गाड़ी जब खराब हो जाती है, टाइम सही नहीं दे रही, तो आप क्या करते हो उसका? कैलिब्रेट करते हैं सर, क्लीनिंग करते हैं, सेल बदलते हैं। कैलिब्रेशन किस तरह पर, अगर सेल से भी काम नहीं होता फिर क्या करते हैं? सेल तो डायरेक्ट आप नहीं, आप जाएंगे पहले सेल चेक करेंगे कि वाकई सेल खराब है कि नहीं है, कोई और मसला है, पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर, एरर को फाइंड करेंगे। एरर, डिटर्मिनेशन ऑफ एरर, पहले आप उसको इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करें, फिर उसमें अगर प्रॉब्लम है उसको डिटरमिन करें, फिर उसका जो लिमिट है उसको चेक करें कि क्या ये जो लिमिट मेरे दे रहे हैं ये उस टॉलरेबल लिमिट में है कि नहीं है। समझ आ रही है? अगर नहीं है तो ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आप माइनर चेंजेस कर ले, उसमें एडजस्टमेंट कर ले, उसको उस टॉलरेबल लिमिट में ले आए, फिर उसको आप कैलिब्रेशन सेटअप अलॉट करें कि उसमें एक्टिव है, ओनली फॉर इंडिकेशन है, रिजेक्ट है, रिवर्क है, क्या चीज है इसमें। ठीक है? और उसको कहते हैं कि एक साल के बाद इसको दोबारा फिर हम कैलिब्रेट, उसको नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट। जब आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग खराब हो जाती है, आप क्या करते हो? आप इसको ले जाते हो वर्कशॉप में, वो उसकी क्लीनिंग, प्लस स्पार्क प्लग वगैरह क्लीन करते हैं, जो मीटर है, ऑयल मीटर है, चेक मीटर है, ये सारी, उसमें अगर कोई डस्ट वगैरह है, उसमें कि अगर कोई सैंड पार्टिकल वगैरह जमे हुए हैं उसको रिमूव करता है, उसको क्लीन करता है। ठीक है बेटा? उसमें अगर फॉर एग्जांपल एयर फ्यूल क्वालिटी का कोई रेशो है, एक्सेलरेशन का कोई इशू है, आरपीएम का कोई इशू है, तो वो एडजस्ट करते हैं उसके साथ। ठीक है बेटा? और उसके बाद उसको कहते हैं कि ये सही है ना, फिर उसकी कंजम्पशन वगैरह चेक करते हैं। अगर आपकी गाड़ी की कंजम्पशन पहले खराब थी, ज्यादा थी, अब आप ये कंजम्पशन आप कहते हैं कि पहले ये मुझे
10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर लीटर देता था, अब तो ये मुझे 12 किलोमीटर पर लीटर देता है। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप उसको चेक करते हुए एडजस्ट करते हो और दोबारा उसको उस इफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसको फिर दोबारा लेके आ जाते हो। ठीक है बेटा? यस सर। एंड देन आपके ये मुख्तलिफ की जो माइक्रोमीटर्स है, मुख्तलिफ किस्म के स्लिप गेज है, उनकी ये सामने ये जो आपकी जो एक्सेप्टेबल ये क्वालिटी लेवल लिखा हो, ये जो है एक्सेप्टेबल टॉलरेंस डिमांड लिखी हुई है, और इसके साथ जो एक्चुअल ड्यूरेशन है कि किस मंथ में, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्लिप गेज, तो ये तकरीबन 3 ईयर्स के बाद इसको रिकैलिब्रेशन करते हैं। इसकी ये क्लीनिंग वगैरह चाहिए आपको, ताकि इसकी कैलिब्रेशन आउट ना हो जाए, क्योंकि 3 ईयर्स मच मोर टाइम फॉर मटीरियल टू चेंज डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो आपने मुख्तलिफ उसकी डायमेंशन से, इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है बेटा? असाइनमेंट तो आपकी हो गई, इसको आप चेक कर लें। ये वैसे केस स्टडी है, जो बुक मैंने आपको बताई उसमें ये है कि आप डायल कैलिब्रेशन टेस्टर और कैलिब्रेशन ऑफ गेज ब्लॉक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरह के, तो ये आप देख ले जरा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, एक 5 मिनट ब्रेक ले बेटा। यस सर। कितना रहता है सर? बस एक तकरीबन 10-15 स्लाइड है, इतना नहीं है, ये आपको पता है वैसे रफली है। आप थोड़ा सा एक 5 मिनट ब्रेक लें, मैं फिर आता हूँ। ठीक है बेटा?
ये बेटा यस सर। स्टार्ट करें? जी सर। ओके, लेट्स स्क्रीन नजर आ रही बेटा? यस सर, बस आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है सर, बाकी स्क्रीन नज़र आ रहा है। एक मिनट, अभी सही आ रही होगी बेटा? जी जी सर। वो माइक थोड़ा सा साइड। ओके बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट द लीनियर मेट्रोलॉजी। आपके ख्याल में लीनियर मेट्रोलॉजी क्या चीज़ है? जी बेटा। सर 1 डिग्री प्लेन में जी? किसी मेजरमेंट को हम ये कहते हैं, When we तो एक want, लाइन में सर मेजरमेंट। अच्छा, when we want to use the length measurement or linear metrology, so that the instrument that being used for the measuring the length, that is what we call linear metrology. Okay, or the science that is being used in the length measurement is considered as a linear metrology. It is defined as a science of linear measurement for the determination of distance between 2 points. It is applicable to all external and internal instruments: distance, length, diameter, thickness, and straightness. Its principle is to compare the dimension to be measured and align with the standard dimension mark on the measuring instrument. And one of the common example of this one is the shield wheel. अगर आपके पास कोई लेंथ है और आपके पास या मेजरिंग टेप है, तो उस मेजरिंग टेप पे आपके पास ऑलरेडी एक ग्रेजुएशन ये लिखी होती है, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडेट्स है वो। तो आप क्या करते होते, आप लेंथ को मेजर करते और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो मार्किंग है उसके साथ कंपेयर करते हो कि इतनी इसकी डायमेंशन कितनी है। ठीक है बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल द रफली लीनियर मेट्रोलॉजी. अब they have two different type of approaches. Number one, the linear metrology is called 2-point measuring contact member approach. कि आपके पास 2 contact point है और वही 2 contact point उसके साथ measuring instrument का जो है 2 contact point है और वो दोनों वर्किंग वर्क पीस के साथ या जो वर्किंग या जो लेंथ मेजरिंग डिस्टेंस है उनके साथ जो आप कंटेक्ट पे करते हो और उनकी जो लेंथ मेजर करते हो तो आपको फिर वो जो है कि 2 पॉइंट है. These are the two different types. Like जो वर्नियर कैलिपर है या जो आपके पास जो मेजरिंग माइक्रोमीटर है, ये 2 ends है इसकी, and that is being contact with the measuring distance as well. So that is what we call 2-point measuring contact member approach. इसके अलावा 3-point measuring contact member approach, उसमें कि 2 पॉइंट जो आपके है कंटेक्ट में होते हैं और 1 पॉइंट आपका जो है वो फ्री होता है. जैसे आप फॉर एग्जांपल वी ब्लॉक, यूजिंग वी ब्लॉक, ये जो है इसको हम कहते हैं वी ब्लॉक. और वी ब्लॉक इफ यू वांट टू हैव अ कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट और जिस कर्व सरफेस की आप जो मेजरमेंट लेते तो आपके जो 2 पॉइंट है, 2 कांटेक्ट मेंबर है वो इसके साथ कनेक्ट है और ये जो ऊपर वाला है ये जो फ्री है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन द लेंथ इज मेजरमेंट. सो टू मेजर द डायमीटर ऑफ द ब्लॉक हेल्ड इन अ वी ब्लॉक, बिकॉज आउट ऑफ दिस 3 मेजरिंग कांटेक्ट मेंबर 2 आर फिक्स्ड व्हाइल द वन इज फ्री. इसको फिर हम कहते हैं 3-point मेंबर कांटेक्ट मेंबर अप्रोच. The instrument used in linear metrology are classified. आप इसको जो लीनियर मेट्रोलॉजी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो नॉर्मली या तो ये है प्रिसीजन मेजरमेंट्स है या नॉन प्रिसीजन मेजरमेंट है.
अगर आप स्टील रूलर को ले रहे तो वो भी लेंथ लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन दैट इज नॉट प्रिसाइज। अगर आप कंपैरेटिवली वर्नियर कैलिपर को ले या माइक्रोमीटर को ले तो दैट इज बीन कंसिडर्ड एज अ प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू द स्टील रूलर। समझ आ रही बेटा? Yes, sir. ओके, स्टील रूलर, यू नो व्हाट वी मीन बाय स्टील रूलर। कैलिपर को भी आपका आइडिया है, ठीक है बेटा? ये चीज आपने देखी हुई है, ये नॉर्मली इट डजंट, अगर आप तो अब यू जस्ट गो थ्रू तो यू विल फाइंड आउट व्हाट डज इट मीन। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिपर, ये नॉर्मली कहाँ पे आपने यूज किया हुआ ये वाला? इस तरह के वर्कशॉप में अगर आप कहते कि मुझे 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस इससे मेजर कर लो, इससे तो कैसे करेंगे? सर पहले किसी स्केल पे सर इनके दो नॉब्स को हम फिक्स करेंगे 10 पे, और सर फिर उसी के रिलेटिव हम उस ऑब्जेक्ट का सर क्या कहते हैं साइज को डिफाइन करेंगे। मार्किंग ले लेंगे, उसके साथ मार्किंग ले लेंगे, मार्क लगा देंगे ना उसके साथ। जी सर। प्रिसाइज होगी कि नहीं होगी? नो सर, उतना प्रिसाइज नहीं होगा तो कैसे कंपेयर टू करेंगे? अदर्स। इस प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए आप फिर क्या करेंगे? मोर प्रिसाइज के लिए क्या करेंगे? शाबाश, सोच ले। अभी आपने पढ़ा नहीं है स्लिप गेज, वही 10 मिलीमीटर अगर आपके पास पड़ा हो, मैं वैसे कह रहा हूँ, तो 10 मिलीमीटर का स्लिप गेज ले और उसके साथ इसको मेजर करे पहले और फिर उसके साथ मार्क लगा दे। Yes, sir. ओके, ये जो है सेंटर मेजरिंग क्लिप है, स्लाइडिंग क्लिपर है, ये सारा आपको वर्नियर कैलिपर भी आपको आइडिया है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, किस तरह है किस तरह नहीं है। इंस्ट्रक्शन उसकी यूज़ भी आपको पता है, एग्जाम्पल भी आपको पता है। वर्नियर हाइट गेज, तो किसी ने देखा हुआ है वर्नियर हाइट गेज? अगर ये फॉर एग्जांपल अब Yes, काम sir. नहीं करता तो उस पे आप लगा दे ओनली फॉर इंडिकेशन, तो ये एज अ स्टैंडर्ड स्टैंड के तौर पे यूज होगा, लेकिन एज अ इंस्ट्रूमेंट ये फिर यूज नहीं होगा। समझ आ रही बेटा? यस सर। Yes, sir. कहाँ पे लगा होता है वैसे नॉर्मली? सर जी हमारे वर्कशॉप में था यूनिवर्सिटी अच्छा, में, ठीक है। वहाँ पे देखा है। अच्छा, कहीं आप डॉक्टर के पास गए हुए? डॉक्टर जो बच्चों वगैरह के साथ आप गए हों कहीं, तो बच्चों को डॉक्टर के पास है तो यस सर, सर, लगा वो होता है। हाइट तो एक तो चेक करते हैं। एक तो आपका वेट चेक करते हैं ना, यस सर। एक उसके साथ एक हाइट, उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं मुख्तलिफ उसके साथ यस सर। हाइट के लिहाज से, तो वो एक रफ किस्म की इंडिकेशन के तौर पे यूज होता है, कोई इस तरह वो यूज नहीं होगा। ठीक है बेटा, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट तो वो नहीं लेते, वो तो एक रफ आइडिया लेते हैं। ठीक है, यस सर। अब मैं इससे डेप्थ मेजर करना चाहूँ, किस तरह करूंगा फिर? क्या इसका डिजाइन किस तरह होगा? डेप्थ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के, शाबाश। इस हाइट गेज को मैं कन्वर्ट करता हूँ डेप्थ गेज में, मेजरिंग गेज में, तो क्या होगा फिर, किस तरह होगा? सर जी इसके साथ एक नीडल अटैच करेंगे, फिर और सर जी इसको ये जो इसकी जितनी लेंथ है ये गेज की, उतनी हमारे साथ नीडल होगी, तो उसी के मुताबिक फिर हम डिप मालूम करेंगे। ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. कहीं आपने पुराने ज़माने के जो अंग्रेज़ ज़माने के वो जो नहर वगैरह बने हुए, नहर सिस्टम है, नीरे सिस्टम है या केनाल है, आप जाएं उस पे अक्सर ये चीज़ें लगी होती, Yes, sir. डेप्थ मालूम करने के लिए, कि टैंकी पे चीज़ों पे लगी होती है सारी चीज़ें, इस तरह स्विमिंग पूल में लगा होता है। ठीक है, यस सर।
ओके, डिजिटल वर्नियर कैलिपर वो भी आपको पता है, माइक्रोमीटर भी आपको पता है, इसका लीस्ट काउंट भी पता है, लिमिट ऑफ एरर भी आपको प्रोवाइड किया है कि माइक्रोमीटर की लेंथ क्या है, और इसके साथ आपको एक इस तरह की एक जो है एक क्या कहते हैं, ये आपकी वही चीज़ है, ये आपकी वही मैक्सिमम लिमिट ऑफ एरर है, ये मिनिमम लिमिट ऑफ एरर, ये टारगेट है। इसमें आप जहाँ भी वो जो मैं अक्सर अभी आप कभी कभार आपको चार्ट बना कंट्रोल चार्ट बना के देता हूँ, ये वही चीज़ है, लेकिन इसकी जो है वही लिमिट ऑफ एरर है। तो आपका जो अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे काम कर रहा है और ये है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है, ये मैक्सिमम एरर के तकरीबन पहुँच गई है, तो आपने फिर यहाँ पे चेक करना है कि ये इस वर्क पीस में मसला है कि नहीं, इस जो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप चेकिंग कर रहे हैं उसमें मसला है। ठीक है बेटा, और ये आपकी इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करने के लिए एक डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मली यूनिवर्सल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम हियर वी फिनिश द मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड एंड मेट्रोलॉजी। दूसरा पोर्शन शुरू करें बेटा? नो सर। जी अच्छा बेटा, anybody would like to have any question? जी बेटा। सर would like to let us know about the case study जो आपने असाइनमेंट देने वाले हैं सर, उसके मुतालिक। मैंने असाइनमेंट तो एक मैंने आपको ऑलरेडी दी है, रात को आपके उस पर पोस्ट हो गई है, मेरे टीए साहब ने, मैंने उसको फॉरवर्ड की तो उससे पोस्ट की है। यस सर, ये वाली जो असाइनमेंट है ये आपकी होम रीडिंग के लिए, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इसको आप देख लें। ठीक है बेटा, इस तरह की क्वेश्चन है, तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए आपको बता कि इसको प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। अच्छा, anybody would like to have any question? Sir, da taper tisa tawai. Da taper tisa tawai. Halak ci गाड़ी da गला बुझी मिस्त्री लोग दे लटे पटे हो। क्लीनिंग वाला कहीं कहना बेट बच्चे, स्पार्क प्लग वाला क्लीन की, आगे के क्लियरेंस वगैरह चेक की, अगर उसका नेक्स्ट तरह के बरादी खबर डिस्कस को खबर ची पेपर गेजेस बताओ या है। ठीक है बच्चे, आप संग चेक को संग चल बको रिपोर्ट कवर वी विल बी यूजिंग। ठीक है, सही है। ओके वाजिद, आप मैं ज़रा एक मिनट वो चेक करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं बेटा? यस सर।